Welcome, this is Najma Minhas with Global Village Space. I'm joined today by Mr. Ahmad Pansota to look at the latest decision by the Islamabad High Court in which it suspended an earlier decision which had asked the PCP to conclude the PTI foreign funding case within 30 days. Ahmad, thanks for joining me. Thank you very much for inviting me in the first place to speak on this important issue. Ahmad, what is the significance of this latest decision by the Islamabad High Court? Well, at the moment, it is important to understand that the decision Islamabad High Court ने दिया है, this is not a decision, this is a petition which has initially been filed. और इस petition से पहले इस petition का एक background है that I need to explain first. सबसे पहले ये यहाँ पे हुआ ये है कि इस petition से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल जज जो थे, जो कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, उन्होंने एक डिसीजन दिया था और उस डिसीजन में बेसिकली वो एक पिटिशन फाइल हुई थी और उस पिटिशन में ये कहा गया था कि आप इनको अदालत को ये डायरेक्शन दें, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कि ये केस को डिसाइड करें एट द अर्लीस्ट, बिकॉज ये केस जो है दिस हैज बीन लिंगरिंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम और जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग का इशू है that is not been put to rest. अब उसको डिसीजन देते हुए मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बहुत सारी बातें की, जिसमें से एक दो बातें ऐसी थी जिस पर जो पीटीआई की लीडरशिप है, जो पीटीआई के लॉयर्स हैं, they were not in agreement with that. And the most important thing being कि एक तो कहा गया कि इसको 30 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला किया जाए, नंबर वन, एंड सेकेंडली ये कहा गया, कुछ रिमार्क्स ऐसे दिए गए कि the PTI leadership has to come clean, the PTI leadership has to come, of course, अगर कोई फंडिंग का इशू जो है वो रिसीव होता है prohibited sources के थ्रू, तो that will reflect on the leadership of the party. So इन बातों की वजह से what happened was face the music. They need to face the music, which were quite strong language to be used in a case. I'm not sure if that is something that the honorable judge should have been using as far as writing the judgment. I mean, I'll have to tread on a very thin line because we were talking about a judgment and we are allowed to make a fair comment. But you see, the most important thing here is कि आप उसका जल्दी फैसला करवा सकते हैं, लेकिन टाइमलाइन नहीं दे सकते, because this is something that cannot be read into the law. And this is exactly what has been done. So, of course, the PTI leadership, through their lawyers, went for the divisional bench. As a court, what stops you from giving the timeline that you're referring to? I mean, if you follow that will take me in a completely different direction. That unless you want the vlog to be banned, but I would like to make a comment. You see, courts in Pakistan have a tendency to go left, right, and center and not go straight. You see, in writ jurisdiction, which is a jurisdiction under Article 199 of the Constitution of Pakistan, and here the courts are at liberty to pass any order. And I think in doing so, at times they do prescribe timelines. But then there are principles of law which say that something which is not expressly provided in the law, you cannot read that into a law. It's just like saying that if a law does not provide for a timeline, and I, as a judge in my constitutional jurisdiction, I simply wake up one fine morning and say, "Isko ab 10 din mein faisla kare." I think that sort of is not something that is advisable when a judge is sitting in his constitutional jurisdiction. So this is something which was taken, and I think once again I'll have to praise the Honorable Chief Justice, who's part of the divisional bench which has suspended this. Justice Atar Manila was very clear when he took up this case, and he said that Election Commission of Pakistan का तो वैसे ही duty है under the law to look after this, और उसका एक periodical audit करना उनका मकसद है. So why do you have to specifically tell them to do this? So this is not the court's job. And I mean, at this point in time, I'd like to clarify this. There are two schools of thought. First of all, there is one school of thought that Mr. Atar Manila is following, and that is something that I also propagate, that courts are not supposed to interfere in matters of public policy or in matters where the legislature comes in, or the political issues for that matter, because for that, particularly a parliament is elected and people elect their representatives. Judiciary is there to review an administrative action, but that review has to be limited. So he comes from that school of thought. But then there is another school of thought, which is like the crazy school of thought at times. I mean, like I'm talking about Justice Saqib Nisar Saab, for whom I have a lot of respect. He's done some fantastic jobs as well, but then he goes in a different direction, and he feels that under Article 1872 of the Constitution of Pakistan,
as a Supreme Court judge, he can do complete justice. Okay, so then you've got these two schools of thought. Basically, because the ECP is a kind of a constitutional institution, that the judiciary should not get involved in setting timelines. Or this is the thing that Athar Manullah and Justice Babar basically have suspended, this timeline, right? So let's come back to precisely, the case. Yes. The case, Precisely, yes. केस के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएं. What is this case? Give us some background, because actually बहुत पुराना केस है, 2014 का चल रहा है, I think. देखें, केस जो है, केस अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस केस को देखने के दो जाविये हैं. इस केस को अगर आप देखें तो ये नवंबर 2014 से केस चल रहा है, और ये एक पीटीआई के ही अपने एक मेंबर हैं जो बाबर साहब हैं, उनकी तरफ से ये केस फाइल हुआ था, अकबर बाबर साहब की तरफ से. और अगर आप इस केस को गौर से देखें तो उसमें कहा यह गया था कि पीटीआई ने कुछ फॉरेन फंडिंग ली है, और फॉरेन फंडिंग लेने के बाद पीटीआई अपनी पार्टी को चला रही है, और हमारे कानून के मुताबिक जो हमारा लॉ व्हिच इज द इलेक्शन लॉ प्लस आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि एक पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट बी फॉरेन फंडेड. नाउ देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू. पीटीआई का स्टांस ये है कि दिस इज नॉट फॉरेन फंडिंग, दिस इज प्रोहिबिटेड फंडिंग. और जो अकबर एस बाबर साहब हैं एंड ऑफ कोर्स अदर पीपल, दे ऑल फील दैट दिस इज foreign funding, because foreign funding makes it a very different sort of a case. Then that leads to, leads to prohibition. For the average layman, आप जरा फर्क हमें clarify करें कि foreign funding क्या है और prohibited funding क्या है. देखिए, प्रोहिबिटेड फंडिंग तो वो होगी जो कि कानून के तहत जिस फंडिंग को रोका गया है, कि लेट से आप किसी फॉरेनर से नहीं ले सकते, लेट से आप किसी ऐसे शख्स जो कन्विक्टेड शख्स है उससे नहीं ले सकते, और मे बी डिफरेंट कैटेगरीज. फॉरेन फंडिंग जो है दैट सॉर्ट ऑफ गिव्स इट फीलिंग, और दैट गिव्स इट दैट अंडरटोन कि एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत फंडिंग. जो आप कॉन्स्पिरेसीज आर इन आई वुड से क्वाइट फैशन दीज डेज. So, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो वो ऐसा समझा जा रहा है कि जो कॉन्स्पिरेसी है उसके तहत इसको फंडिंग किया गया है. There are two different things. वो कहते हैं कि जी हमारे बेशतर पाकिस्तानी, एंड स्पेशली पीटीआई तो हार्बर ही करती है और अपना बैंक करती है ऑन द ओवरसीज पाकिस्तानीज, और वो ये समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब हमें पैसे भेजते हैं उसमें एट टाइम्स डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग भी आ सकते हैं. अब अगर ये देखा जाए तो इट इज लाइक वन ऑफ दोस टेक्निकल ऑफेंसेस. के पाकिस्तानी से फंडिंग नहीं आ रही, इजरायली भेज रहे हैं, इंडियन भेज रहे हैं, अमेरिकन भेज रहे हैं, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें इंडियन, इजरायली वगैरह के पैसे भी हैं? तो जो एलिगेशन है वो तो यही है कि इंडियंस और ये वो सारा, whereas पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन साहब भी एक्सप्लेन कर सके, एंड मेनी अदर पीपल, देयर लॉयर्स, व्हाट दे हैव स्टैंड, वो कह रहे हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी फॉरेन फंडिंग है भी जो कोई लेट से किसी इंडियन ने भेजी है, किसी और ने भेजी, दैट्स अ वेरी मिनिमल फिगर, लाइक मस्ट बी इन हंड्रेड्स और मे बी $1,000 और समथिंग लाइक दैट. वो कहते हैं कि इट डज नॉट हैव अ substantial impact. Now this is the pinnacle, this is what we need to actually discuss. क्या इस छोटे से मामले के ऊपर ECP should go ahead and say कि जी ठीक है, हम रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं कि इस पार्टी को खत्म कर दिया जाए, या वो ये कह सकते हैं कि जी इस मामले को हम डिस्पेंस करते हैं, which is where the argument of PTI's lawyers come in and they say कि इसके ऊपर फॉरेन फंडिंग नहीं, हम प्रोहिबिटेड फंडिंग कहते हैं. कई दफा गलती हो जाती है, उस पर आप पॉलिटिकल पार्टी को खत्म नहीं कर सकते. अब वो फिर बैलेंस आ जाएगा इस चीज का कि द राइट to practice or the right to protest or right to sort of form a political party and then lead on political affiliations is a fundamental right under the constitution. Now that is subject to reasonable restriction. So क्या वो restriction जो ECP लगाना चाह रही है रीजनेबल है या नहीं है, ये सारे की सारी बहस एट द एंड ऑफ द डे. ये अगर इसकी ऑलरेडी एग्जांपल है हमारे पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर आप देखा जाए तो पीपीपी है, वो जब कुछ चीज होती है तो एक पी ज्यादा ऐड हो जाता है, एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग. सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, जो एक्चुअल पीपीपी है दैट वाज बैंड, जिसके चेयरपर्सन जो है बिलावल साहब थे और आई थिंक आसिफ जरदारी साहब थे, और वो ओरिजिनल सेक्रेटरी जनरल. सो इस तरह पीटीआई को भी ये इश्यू दरपेश है. तो अमाउंट क्या है, किस अमाउंट की हम बात कर रहे हैं over which ये केस चल रहा है? देखिए, एक्चुअली is it 1 crore, is it 1 lakh amount? I don't think so. इतनी बड़ी अमाउंट है, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है मेरे नजदीक. तो जी जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग होती है, क्योंकि अभी तक तो एज सच पब्लिक डोमेन में उस तरह डिटेल्स नहीं आई हुई, और पीटीआई ने भी इट हैज टेकन देम about I think 8 to 10 years to sort of be very candid with the court. And let's be honest, इस केस के अंदर one thing is very sure कि अगर आपने स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ की तो पीटीआई इज गोइंग टू बी बैंड.
ये तो बड़ा क्लियर है। और अगर आपने थोड़ी सी पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की, जिसका मैं हमेशा आई एम मोर ऑफ एन एडवोकेट ऑफ द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, बिकॉज लिटरल इंटरप्रिटेशन में चीजें बहुत दफा तंग करती हैं, जिस तरह आर्टिकल 63 एक एग्जांपल है, देन सेवरल अदर एग्जांपल्स। अगर आप लिटरली कानून को अप्लाई करेंगे तो उसके मुताबिक तो मेरा ख्याल असेंबली में एक आधे बंदे के अलावा शायद रह ही कोई ना जाए। So you're saying कि literal application के अंदर all the political parties would get knocked out of the system right now? No, I'm not saying all the political parties. What I'm saying is कि अगर आप law की literal interpretation किसी और context में करें तो हमारी आधी assembly खाली हो जाए। So इस context में अगर आप law की interpretation करेंगे तो of course PTI has no defense, but आपको literal interpretation नहीं करनी, आपने substantive side उसकी देखनी और आपने देखनी है क्या वो foreign funding first of all is capable of being termed as foreign funding under the law, एंड सेकेंडली अंडर द लॉ अगर वो प्रोहिबिटेड फंडिंग में आती है तो उसकी पेनल्टीज हैं, आप उनको फाइन लगा सकते हैं, आप उनको उस अमाउंट को फोफीट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट बाबर इवान साहब इज सेइंग एंड दिस इज व्हाट शाह खावर साहब सेड इन कोर्ट कि अगर इस ऐसी को फंडिंग आई तो आप उसको फोफीट कर लें। हाँ, अगर ये एस्पेक्ट आई थिंक वाज़े तौर पर सामने आता है कि ऐसी फंडिंग के नतीजे में कोई पॉलिटिकल पार्टी ने लाइन ली है जिसको हम लॉबिंग बोलते हैं, लेट्स से इंडिया से फंडिंग आई है एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर लॉबिंग फॉर ए पर्टिकुलर थिंग, then that's a serious thing. So if ECP can reach that conclusion, and now mind you, in the very recent judgment which has been passed in the context of Faisal Wada Saab, it has been held that ECP is a court. वो ये कहते हैं कि ECP court है, whereas I have a different view on that. So अगर ECP एक court है which can record evidence, which can obviously call summon witnesses, तो वो इस चीज को थ्रैश आउट कर सकते हैं। Why do they need to go in the details and say कि नहीं 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 नहीं, हमें पता है आपको फॉरेन फंडिंग आई है। फॉरेन फंडिंग इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन, दिस कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पीटीआई एज फार एज द कमिंग इलेक्शंस आर कंसर्न्ड। सो उस हिसाब से चीजें। So what is if let's say the ECP declares that this is foreign funding, so what is the consequence of that? Well, under the law what ECP can then do is that ECP will obviously एक रेफरेंस बनाएगी और रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है फिर उस रेफरेंस को सुनेगी उसके बेसिस पर, एंड देन वो उसको डिसाइड कर सकते हैं अंडर द इलेक्शन लॉज कि क्या ये पार्टी जो है इसको बैन किया जाए या नहीं किया जाए। अब ये तो है उसकी लीगल साइड। अब आप उसकी पॉलिटिकल साइड देखें तो इस वक्त जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है और जो इमरान खान साहब is pushing it to the limits in almost all contexts, I think it will be very very difficult for any court or let alone the Supreme Court of Pakistan to ban a political party. It will not be a very good decision. You see, हर चीज जो है उसको आपने कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। आप पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी या एटलीस्ट सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देंगे तो व्हाट पर्पस विल यू अचीव आउट ऑफ इट? एक पाकिस्तान का साइजेबल पोर्शन 1,40,00,000 लोगों की जो विल है उसको आप सबवर्ट कर देंगे जस्ट बिकॉज कि जी को 1000 या को मे बी लेट्स $1,00,000 आया। As long as that amount cannot be justified कि PTI ने ये certain action किए हैं, I don't think so there is any point. It will be a pointless exercise. वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ प्रोग्राम कर देंगे, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफी कर देंगे, it doesn't make a difference. Jैसे PPP, just like PPP. That's exactly what the PPP did. Everybody calls it PPP. I'm sure nobody knows कि PPP है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि what about Supreme Court decision on other political parties? Yes, that's a very very important decision, because if you have a look at the history of this case, you will find out that this case was not that on that fast track basis unless a joint delegation of the political parties had gone and met the chief election commissioner. और ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो डेलीगेशन थी बेसिकली, ये इस मार्च की बात ही मैं कह रहा हूँ, PMLN, PPP, JUIF, ANP and BNP। सो पॉइंट ये है कि अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज के मिलने के बाद हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इतने तेज हो गए हैं या हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इतना कानून की इम्प्लीमेंटेशन का शौक हो गया है, तो देन दे डिमांड कि द सेम थ्रेशोल्ड शुड बी अप्लाई इक्वली टू ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज। पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ऑडिट होना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें कितनी फॉरेन फंडिंग है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट ऑडिट। To me, as a student of law, this hardly matters. You see, such things should not even be part of the law. But of course, this is law. I'll have to respect it. मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब आप इनका ऑडिट करवाएंगे एंड आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस टाइप की फंडिंग के इश्यूज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं। So जब आप उनको कुछ नहीं कह रहे और इनको कह रहे हैं तो then it becomes selective approach, which is what PTI is highlighting. In 2017-18 तो एक सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई थी ना, जिसपे उन्होंने कहा था कि ऑपोजिशन पार्टीज की भी इलेक्टोरल फंडिंग आपने, पॉलिटिकल फंडिंग आपने देखनी है।
उस पे कहाँ तक पहुंचा है ECP? क्या has it even started looking at that funding? To be very honest, मेरा नहीं ख्याल कि ECP जो है is aware of that judgment, and even if it is aware of that judgment, they are very fond of following that judgment. So उनको सुप्रीम कोर्ट की selective जो रीडिंग है ऑफ जजमेंट्स वो बड़ी पसंद है, और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो काफी हद तक मुतनाज़ा हो चुके हैं। इमरान खान साहब की भी रिसेंट तो आई थिंक जो रिक्वेस्ट है या डिमांड है, अंडर दैट he has sought the resignation of chief election commissioner. So chief election commissioner, to prove his independence and to prove that he is not biased, he must conduct an audit of all the political parties. ये कितना मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप इस नहज पर, जब PTI already बहुत ज़्यादा battered and bruised है because of a lot of things which have happened in the past, in the near past, आप ये काम भी करेंगे तो ये उनको दीवार से लगाने के मुतरादिफ होगा, और उसका नुकसान क्या होगा कि इनकी political parties already on the streets. So अगर उसको if you make somebody completely irrelevant, तो फिर आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, what they're capable of doing. और उनके जो followers हैं, I have respect for all the followers, but उनके followers कुछ बहुत ज़्यादा out of the line जाते हैं, out of the way जाते हैं. I may not support all of that. So if they find out कि पहले तो आपने हमारी पार्टी को दीवार से लगा दिया है and now आपने बैन कर दिया है, I don't think so this is going to be a very good डिसीजन, जो कि अदालतों को देखना पड़ेगा, बिकॉज अदालतों का काम सिर्फ ये नहीं है कि 2+2 करके 4 करें, क्योंकि उन्होंने 2+2 4 करना है तो 2+2 4 जुडिशरी के केसेस में, तो फिर मैं 5-10 केसेस आपको हाईलाइट कर देता हूं, एंड इफ यू डू 2+2 4 द आंसर विल बी 0 इन द सुप्रीम कोर्ट. सो सिमिलरली if you follow that spirit of law, then you must apply it equally. अब अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को उस लेवल पर ले जाएंगे, I think it's going to cause a chaos. मुझे बताएं, for example, we've had several elections in the last 10-20 years, let's say. इसमें 4 elections हुए हैं बल्कि. इसमें when was this law introduced and how many times has ECP actually told the political parties कि मुझे अपनी general election की funding दिखाएं? I mean, is there any law which asks the ECP to do that, and have they ever done it? Have they been looking? जैसे हम बातचीत करते हैं ना कि crores of rupees, अरब रुपए लगते हैं एक election के लिए. So has the ECP looked at general election funding overall? I don't think so. ECP is even concerned about following this duty, and this is exactly what Justice Athar Manila, I think, pointed out. And if I were to quote, that's exactly what he said. He said that I am surprised that they're supposed to conduct an audit every year. Why are they not doing it? And if they are doing it, then what's the need of this detailed audit that every party is pushing? So what Athar Manila pointed out today was, or the divisional bench, I would say, was that ECP is oblivious of its duty to which it is supposed to perform under the constitution and the law, and now they are just pursuing the case against one political party. और जो आपने लॉ की बात की, ये 2002 के बाद जब ये इंट्रोडक्शन हुई है इस लॉ की, और ECP का लॉ तो खैर काफी पुराना है, बस ECP फंक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कानून के तहत इनकी पीरियोडिकल ये जो चेक्स हैं और ये जो ऑडिट्स हैं इन्होंने करने हैं, ये रिव्यूज करने हैं, बट आई डोंट थिंक सो आज तक कभी हुए हैं, और अगर हुए भी हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आर वी फोर्स्ड टू बिलीव कि 2022 तक जो ऑडिट्स होते रहे उसमें PTI क्लियर थी, तो यही जाहिर होता है. नहीं, I understand. Thank you so much for your time today, Ahmed. Welcome.